students, welcome to the class. How are you all? Hope you are fit and doing great, and I'm sure you are excited to learn with me. So, myself Divyani Shukla, your SST teacher, and today I'm going to start your chapter number 12, which is a very interesting chapter. Chapter number 12, Natural Resources means minerals. What are natural resources? ऐसी resources जो nature में पाई जाती हैं, those resources which are found in nature are called minerals, and minerals are non-renewable resources, means once they are used they cannot be replenished or renewed quickly. यानी कि ऐसी रिसोर्सेज जो कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा रीन्यू नहीं हो सकती या फिर रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती. एग्जांपल्स कैन बी आयरन, coal, petroleum, gold, etc. And we use these minerals in our daily life in many purposes. So let's begin with this chapter. Build up, look at the given things, find out what metal they are made of and complete the crossword puzzle. So you can look in the first picture. First picture is of a gold. So you will write here GOLD. Likewise, you can do the remaining three by seeing the picture. Moving to the first topic of the chapter, which is minerals. Minerals are natural substances found in earth. They are non-renewable, which means they cannot be replaced once used. Minerals are not made from plants or animals. Examples include gold, salt and iron. So minerals are natural substances which are found in earth. They are non-renewable, means they cannot be replaced once they are used. Examples are iron, coal, etc. And they are not made from plants and animals. All rocks are made up of minerals. When a rock contains a large amount of particular mineral, it is called an ore. Most ores are found deep underground. Mining is the process of digging out ores. Deep holes called mines are dug to extract these ores. So जितने भी हमारे rocks हैं वो सभी किससे बनी है? मिनरल से. जब किसी rock में एक large amount of particular mineral होता है, that is called an ore. और ores कहाँ पे पाए जाते हैं? Deep under the ground. And mining is the process of digging out ores. Deep holes जिन्हें हम mines कहते हैं are dug to extract ores. Now, types of minerals. Minerals are divided into two types. First is metallic minerals and the next is non-metallic minerals. We will discuss it one by one. Now, metallic minerals which are hard and shiny. Metallic minerals are hard and shiny and can conduct heat and electricity. Examples include silver, gold, copper, iron and aluminium. So those minerals which are hard, shiny and can conduct heat and electricity are metallic minerals. Examples are silver, gold, copper, iron and aluminium. Now, characteristics of metallic minerals. Characteristics क्या होती है? First, they are shiny and hard. Metallic minerals have a bright, shiny surface and usually hard. तो metallic minerals जो हैं वो shiny है, उनका shiny surface है, they are shiny and usually hard. Good conductors, they allow heat and electricity to pass through them easily. Metallic minerals are good conductor of heat and electricity. Can be melted. These minerals can be melted and shaped into different forms. Metallic minerals को melt करके उन्हें different shapes में फॉर्म किया जा सकता है. फाउंड इन रॉक्स. मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड रॉक्स. तो मेटालिक मिनरल्स हमें डीप इनसाइड द अर्थ देखने को मिलते हैं. यूज्ड इन मेनी थिंग्स. दे आर यूज्ड टू मेक मशीन्स, टूल्स, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स. मेटालिक मिनरल्स आर यूज्ड टू मेक मेनी थिंग्स लाइक मशीन्स, टूल्स, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स. नाउ, classification of metallic minerals. Metallic minerals are further divided into two groups. First, ferrous minerals. Next is non-ferrous minerals. Ferrous minerals, these contain iron. Examples include iron ore, chromite and manganese. So ferrous minerals contain iron. Examples are iron ore, chromite and manganese. Next is non-ferrous minerals that do not contain iron, जो कि iron contain नहीं करते. Examples are gold, silver, copper and lead. Now, next type of mineral is non-metallic mineral, जो कि hard और shiny नहीं होते. Non-metallic minerals do not produce new products when melted. Examples include sand, gypsum, salt and uranium. So non-metallic minerals जो हैं वो हमारे new products नहीं बना सकते when melted. Examples are sand, gypsum, salt and uranium. Characteristics of non-metallic minerals. First is not shiny. They do not have a metallic shine and may look dull. ये shiny नहीं होते और ये dull दिखते हैं. Break easily. Non-metallic mineral are soft and can break easily. So they are soft and can break easily. Do not conduct heat or electricity. They do not allow heat or electricity to pass through them. So non-metallic mineral do not allow heat or electricity to pass through them. Found in different forms. They can be formed in rocks, clay और sand. So ये अलग अलग forms जैसे कि rock, clay और sand में पाई जाती है. Used in daily life, they are used to make glass, cement, fertilizers and poetry. Non-metallic minerals को हम अपनी daily life में use करते हैं, like to make glass, cement, fertilizers, etc. Now, next heading is atomic minerals
What are atomic minerals? Those minerals which have energy stored inside them. Atomic minerals are special minerals that have energy inside them. They are used to make electricity and in science experiment. Some important atomic minerals are uranium, thorium and plutonium. These minerals helps in making nuclear power which gives us clean energy. तो atomic minerals special minerals है जिनके अंदर energy stored होती है. They are used to make electricity. कुछ important atomic minerals हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम. ये मिनरल्स जो हैं ये न्यूक्लियर पावर बनाने में हेल्प करते हैं और ये हमें क्लीन एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं. India has atomic minerals in states like Jharkhand, Rajasthan and Andhra Pradesh. Scientists use them carefully because they are very powerful. तो इंडिया में एटॉमिक मिनरल्स हैं कुछ स्टेट्स जैसे कि झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में. साइंटिस्ट इन्हें यूज करते हैं केयरफुली क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं. नाउ मिनरल ऑयल विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और इसको हम मेनी पर्पसेज में यूज करते हैं. मिनरल ऑयल ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल इज अ थिक डार्क लिक्विड फाउंड डीप underground. It is refined to make petroleum, diesel, kerosene and cooking gas. These are used as fuels. Oil is extracted by digging wells. Areas with many oil wells are called oil fields. Major oil fields in India are located in Digboi, Assam, अंकलेश्वर गुजरात एंड मुंबई हाई अरेबियन सी. तो मिनरल ऑयल जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं जो एक थिक डार्क लिक्विड है जिसको डीप अंडर द ग्राउंड फाउंड किया जाता है. इसको रिफाइंड करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या कुकिंग ऑयल बनाया जाता है. नाउ देन दीज आर यूज्ड एज फ्यूल्स. ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बाय डिगिंग वेल्स. एरियाज विद मेनी ऑयल वेल्स, जिन एरियाज में बहुत से ऑयल वेल्स होते हैं उन्हें हम ऑयल फील्ड्स कहते हैं. मेजर ऑयल फील्ड्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? डिगबोई विच इज इन आसम, अल्कनेश्वर विच इज इन गुजरात एंड मुंबई हाई विच इज लोकेटेड इन अरेबियन सी. नाउ यूजेस क्या होते हैं मिनरल्स के? मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड कार्स बिकॉज इट इज लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. तो एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट और कार्स यूज करने में क्योंकि ये लाइट और स्ट्रॉन्ग है. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम को यूज किया जाता है इन मेकिंग ज्वेलरी. कॉपर इज यूज्ड टू मेक वायर्स, पाइप्स एंड कॉइन्स. Silicon obtained from quartz used in computers. Silicon जो कि quartz से obtained होता है is used in making computers. Iron से बनाते हैं tools, bridges, railway, coaches and engines. Most iron mines in India. ज्यादातर आयरन माइंस जो इंडिया में है वो कुछ स्टेट्स में पाई जाती हैं जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड गोवा. लार्ज फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, रोकेला एंड बकोरो प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर. तो लार्ज फैक्ट्रीज जो हैं जैसे जमशेदपुर, दुर्गापुर एक्सेट्रा ये आयरन और स्टील प्रोड्यूस करती हैं आयरन ओर से. नाउ इट्स द टाइम ऑफ फैक्ट एंड लर्न. मैच द फॉलोइंग. गोल्ड. गोल्ड क्या है? गोल्ड इज अ मिनरल एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. सो यू विल मैच इट विद ऑप्शन नंबर डी. नाउ likewise you can do the remaining. Next topic which is conservation of minerals. In minerals are non-renewable, it is important to conserve them. Minerals non-renewable, it cannot be renewed, reproduced or replenished quickly, so we need to conserve it. तो कुछ यहाँ पे ways given है by which we can conserve it. Use wisely. We should not waste minerals because they take millions of years to form. So we should use minerals wisely क्योंकि ये millions of years ले लेते हैं वापस से form होने के लिए. Recycle and reuse old metals and minerals should be recycled to save resources. रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए हमें मिनरल्स को. जितने भी ओल्ड मेटल्स या मिनरल्स हैं उन्हें रिसाइकल करना चाहिए. फाइंड ऑल्टरनेटिव्स. वी कैन यूज अदर मिनरल्स इंस्टेड ऑफ मिनरल्स वेयरएवर पॉसिबल. तो हमें जहां पे मिनरल्स के ऑल्टरनेटिव्स यूज किए जा सकते हैं वहां पे हमें उसके ऑल्टरनेटिव यूज करने चाहिए. अवॉइड ओवर यूज. यूजिंग मिनरल्स केयरफुली हेल्प्स देम लास्ट लॉन्गर फॉर फ्यूचर जनरेशंस. तो हमें मिनरल्स केयरफुली यूज करने चाहिए ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रहें. प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. माइनिंग शुड बी डन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड हार्मिंग इन्वायरमेंट. तो माइनिंग भी हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में करनी चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट को या नेचर को हार्म ना हो. Minerals are precious gifts from nature. They are used in almost everything. By understanding their importance and using them wisely, we can ensure they last for future generations. तो minerals जो हैं वो precious gifts हैं that are given by nature and we should use them and conserve them by understanding their importance. We should why we should conserve them and use them wisely to last them for our future generations. I hope you have understood the topic explained by me. Now let's begin with vocabulary. First is minerals. Natural substances which are found in earth or a rock which contain a large amount of particular mineral is called ore. Mining, the process of digging out ores from the earth. Mining एक ऐसा process है जिसमें हम earth से
ores को dig out करते हैं. Metallic minerals that do not have shine and contain metals. Non-metallic minerals that do not contain metals and do not conduct heat and electricity. क्रूड ऑयल एक थिन डार्क लिक्विड विच इज यूज टू मेक फ्यूल, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम. कंजर्वेशन यानी कि यूजिंग रिसोर्स वाइडली टू प्रोटेक्ट देम फॉर फ्यूचर. नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर विद सम समरी पॉइंट्स. मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन अर्थ. ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. Metallic minerals are hard, shiny and can conduct heat and electricity. Non-metallic minerals do not conduct electricity and they are dull. Mineral oil, also called crude oil, is a thin dark liquid found underground. Areas with many oil wells are called oil fields. Now let's begin with exercise. Think and answer. Tick the correct option. What are the atomic minerals used for making toys, producing electricity or growing plants? तो atomic minerals को हम किस लिए यूज करते हैं? Producing electricity. Which mineral is used to make wires and pipes? Gold, copper or salt? Option number B, copper. What is the process of digging out ores? Mining, farming or recycling? The process is mining. Which of these is a non-metallic mineral? Iron, gold or sand? Option number C, sand. क्योंकि उसमें कोई भी shine नहीं होती. What type of resource are minerals? Renewable, non-renewable, both A and B. So, minerals are non-renewable resource. Now, fill in the blanks using the words given in the box. Minerals are dash substances found in earth. Minerals are natural. Dash is the metallic mineral used to make jewelry. Gold. Crude oil is also called dash oil. Is also called mineral oil. Dash is used to make aircraft because it is light and strong. Aluminium. Dash is a process of digging out ores. Mining. Next exercise. Tick for the true and cross for the false statement. Minerals are made from plants and animals. No. This is incorrect. Gold is a metallic mineral. Yes. Sand is a metallic mineral. No. Non-metallic. Mining is the process of digging out ores. Yes, this is true. Minerals are renewable resources. No. They are non-renewable. They cannot be replenished quickly. So, thank you students. That's all for today. I hope you have understood it well. Now we'll meet in our next class with some new chapters. Till the time, keep learning, keep doing great. Take care. Bye bye students.